जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम हमने आइसोमेरिज्म का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। वी डिड द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इट्स थ्री टाइप्स: चेन, पोजीशन एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने पहली टाइप कर ली थी, दैट वाज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सो उसके बाद हम फिर अब करने जा रहे हैं अबाउट the other type of stereoisomerism, which is called optical isomerism. आइसोमेरिज्म की इस टाइप को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी of a few organic compounds which is called optical activity. Optical activity means, you know, ability of an organic compound to deflect plain polarized light. That is called optical activity. सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। कुछ ही हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को डिफ्लेक्ट कर दें, उनके थ्रू वो स्ट्रेट अवे पास हो जाती है। नाउ हाउ इज इट डन कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, suppose this is the plane polarized light, one of its ray, and द कंपाउंड जिसको हमने चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो उसके गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो सैंपल है उसमें से इसको पास करते हैं। इन सम ऑफ देम द प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासेस अनडिफ्लेक्टेड, एंड इसका मतलब ये है कि ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। लेकिन जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, they deflect the plane polarized light positively and negatively, both. So जो भी deflect कर देंगे plane polarized light को, those are called optically active. This is, positively deviating or positively deflecting, और ये negative। और सेम डिग्री से जो है ना ये डिफ्लेक्शन हो रही होती है। सो इफ अ कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, उसमें से आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करें, तो सपोज इफ इट इज डिफ्लेक्टिंग इट बाय +40, तो -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री पर भी जो है ना ये डिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ओके, सो हाउ डू वी फाइंड आउट कि एक कंपाउंड और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे, क्या फीचर होता है उसके स्ट्रक्चर में जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है? तो थिंग इज कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड is optically active. An organic compound is optically active if it has a chiral carbon atom in it. If it has a chiral carbon atom in it. Now, what do you mean by a chiral carbon atom? Chiral carbon जो है, that is a carbon atom which is attached with four
different atoms or groups of atoms. So that is called a chiral carbon. You can also call it the chiral center. तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. Let's take a look at it. Suppose there is a carbon atom attached to four different ones. On one side, it is attached to a hydrogen. The other side, suppose it is attached to a CH3 group. Then the third group of atoms which is attached to it is, suppose, the OH group, and the fourth atom or group of atoms attached to it, suppose, is the chlorine atom. So this is a chiral carbon in the middle, जिसके साथ four different atoms या group of atoms attached हो रहे हैं. And this compound is optically active. इसके gaseous sample में से अगर plain polarized light को pass करेंगे, तो it will deflect it positively and negatively by some angle. And जो if there is a chiral carbon, if there is a chiral carbon in a molecule, the organic molecule, it is called a stereo point. It's called a stereo point in the molecule. And it is marked by an asterisk. So if there is a chiral carbon in the molecule, then these isomers, the two isomers, they will be called optical isomers. And optical isomers are non-superimposable mirror images of each other. They are mirror images of each other, but they are non-superimposable. ठीक है. लाइक अगर आप अपना राइट हैंड जो है वो मिरर के सामने लेके जाते हैं, तो इन द मिरर इट विल लुक लाइक अ लेफ्ट. ठीक है, तो वो सुपर इम्पोज उस तरीके से नहीं हो रहा होता है. अब देखिए, सपोज हमने ये कंपाउंड यहाँ पे कंसिडर किया था. सपोज कर लें कि दिस इज द मिरर प्लेन. अब इसका जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगा, इट विल बी लाइक दिस. द हाइड्रोजन बॉन्ड इट विल बी ऑन इट्स प्लेस. CH3 ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा. Chlorine will be the closest here. और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि the other bond with the OH will be represented like this. If I pick up this whole molecule, if this whole molecule is picked up from here and we try to place, the carbon atom on the carbon atom, the chiral carbon, which is a stereo point here, marked by an asterisk, you will see that the same groups, they will not lie over one another. अगर इस पूरे मॉलिक्यूल को आप पिक कर लें और यहाँ पर रखें, तो यू विल सी कि ये एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली नहीं आ रहे होंगे, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे होंगे. सो दीज आर द टू नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. एंड देखिए, one of it will deflect the plane polarized light positively, the other one will deflect it negatively by the same degree. And these are the two
optical isomers of each other. Now the question arises कि जब हमें different structures given हो of the different molecules, तो हम किस तरीके से इंस्पेक्ट करें? मे बी समटाइम्स द मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स रिलेटिवली लार्जर होता है, वो भी गिवन होते हैं। तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि कौन सा जो है वो कायरल है उसके अंदर और कौन सा नहीं है, उसके कितने आइसोमर्स होते हैं? तो देर आर certain carbon atoms which do not need to be inspected for chirality. For example, a carbon atom that is involved in making of a double bond never inspected for chirality because such a carbon atom is attached with three other atoms, not with four. तो इसलिए इसको इंस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। कार्बन एटम दैट इज इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वो भी कभी कायरल नहीं हो सकता। सच अ कार्बन एटम इज अटैच्ड विद ओनली टू अदर एटम्स। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर नजर आ जाता है भाई CH2 ग्रुप, स्केलेटल फॉर्मूला में आपको यूं नजर आएगा, दिस वन हियर, ये वाला जो है। सो ऐसे कार्बन को भी नहीं इंस्पेक्ट करना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि ये CH2 है, दो सेम हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ अटैच हो रहे हैं। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी CH3 ग्रुप को भी इंस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। लाइक आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर स्ट्रक्चर के अंदर, दिस इज अ CH3 ग्रुप और थ्री का हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो सेम हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो रहे हैं टू द कार्बन। सो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी chiral। सो दीज आर सम ऑफ द वंस जिनको हमें कायरलिटी के लिए कभी भी इंस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। नाउ ऑब्वियसली देर आर कार्बन एटम्स which need to be inspected for chirality। कौन कौन से कार्बन एटम्स हैं जिनको कायरलिटी पॉसिबल हो सकती है उनके अंदर? उसको चेक कर लेना जरूरी है, उनको इंस्पेक्ट कर लेना जरूरी है। तो वो कौन कौन से हैं? नंबर वन, if there is a CH group, ठीक है, CH ग्रुप यहाँ पर है, एक ऐसा कार्बन एटम जो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच हो रहा है। तो दिस वन, जहां पर भी आपको स्ट्रक्चर में इस टाइप स्ट्रक्चर जो है वो नजर आएगा, तो यू विल बी इंस्पेक्टिंग इट फॉर कायरलिटी। आपने फिर चेक करने हैं, दिस कार्बन हियर इन द मिडल दैट इज अ CH, एंड देन जो बाकी थ्री बॉन्ड्स हैं उनको आपने इंस्पेक्ट कर लेना है कि क्या उनके साथ डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ओके, फिर इसके अलावा एक और है भाई, इफ इट इज जस्ट अ कार्बन एटम, नो हाइड्रोजन एटम अटैच टू इट, like for example you है the one in the middle here, that is a single carbon atom, no hydrogen atom attached to it। और आपको फिर इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए कि इसके साथ बाकी जो है वो कौन कौन से जो है वो ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच हो रहे हैं। एंड अगर सब चारों डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हो रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी कायरल एंड इट शुड बी मार्क्ड विद एन एस्टेरिस्क। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनसे आप जरा क्विकली किसी भी स्ट्रक्चर को जो है उसमें कार्बन एटम्स को कायरलिटी के लिए इजीली चेक कर सकते हैं और लेसर टाइम स्पेंड होगा आपको कायरलिटी चेक करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था इसके बारे में, दैट वाज कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स
Total number of stereoisomers. Stereoisomers mean both things. Chirality, ये कायरल कार्बन की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकती है, और ये और क्या हो सकता है भी, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी हो सकती है, उसमें ये दोनों इंक्लूड हो सकते हैं. एनीवेज, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स shown by an organic compound, that will be equal to 2 raised to the power number of stereo points. So अगर एक chiral carbon है, it will have just two ऑप्टिकल आइसोमर्स. दो chiral carbon atoms हैं एक मॉलिक्यूल में, तो कितने हो जाएंगे? 4. अगर 3 chiral carbon atoms हैं, 3 स्टीरियो पॉइंट्स हैं, तो फिर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो है, दैट विल बी 2 रेज टू द पावर 3, एंड दैट विल बी इक्वल टू 8. सो 8 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं उसके लिए पॉसिबल हो सकेंगे. दिस इज अ फॉर्मूला लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट. जी बेटे, सो कुछ क्वेश्चंस अब हम करने जा रहे हैं, एंड these are about the optical isomerism. So the first question is, sorbitol is a naturally occurring compound that has a sweet taste, and it is often used as a substitute, often used as a substitute for sucrose by the food industry. How many chiral centers are present? See the first carbon atom over here at the top. This cannot be chiral because it's attached to two same atoms over here, two hydrogen atoms. So it cannot be chiral. Take a look at the next one. From the top, on one side, it's attached to the OH group. The other group, atom attached to it is hydrogen. फिर जो थर्ड ग्रुप ऑफ एटम इसके साथ अटैच हो रहा है, दैट इज अ CH2OH, and then in the end it has this whole different group of atoms attached to it. So 4 different atoms, a group of atoms attached हो रहे हैं to this carbon, and therefore this carbon atom should be is chiral and should be marked with an asterisk. It's a stereo point in the molecule. The next one, on one side hydrogen attached, the other group of atom attached is OH. फिर आप देख रहे हो कि जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हो रहा है इसके साथ, that is the CHOH, CHOH, and CH2OH. And the fourth group of atom is also different. It is CH2, CH2OH. So this carbon atom qualifies to show chirality. It should also be marked with an asterisk. It's chiral. द नेक्स्ट कार्बन एटम, उसकी भी सेम सिचुएशन है भाई. आप देख रहे हो एक तरफ OH, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ दिस होल डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स लाइक दिस वन, एंड यहाँ बॉटम पर एक और अटैच हो रहा है. सो चारों डिफरेंट एटम्स एक ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, एंड देयरफॉर इट शुड आल्सो बी मार्क्ड विद एन asterisk, and this carbon atom is also chiral, as is the case with the other carbon. But the one at the bottom, ये chiral नहीं है, because you can see two same hydrogen atoms attached with it. So the answer to this question is part B. There are 4 chiral carbon atoms in it. अगर क्वेश्चन यूं पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर इट, सो द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट विल बी इक्वल टू 2 raised to the power number of stereo points, and that should be equal to 16. 16 different isomers of sorbitol can be here. The next question is, some vegetable oils, they contain trans fats that are associated with undesirable increase in the amount of cholesterol in the blood. In these oils, the word trans describes in the usual way the arrangement of groups at a carbon to carbon double bond. अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की एक साइड के ऊपर डिफरेंट एटम्स, एक ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांस. Another thing is, in the diagram below, R1 and R2 are different unbranched hydrocarbon chains. So R1 and R2 are different carbon chains. Which diagram correctly shows an optically active trans fat?
सो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो है वो एक पैरेलल कार्बन एटम प्रेजेंट है, और ट्रांस का मतलब ये है कि उसमें जो एटम्स हैं वो अपोजिट साइड के ऊपर हैं, अराउंड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। तो पहले हम जरा ट्रांस वाली बात के ऊपर फोकस कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन बिल्कुल ऑपोजिटली प्लेस्ड है, डायगोनली प्लेस्ड है अराउंड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। इट इज अ ट्रांस। यहाँ पर भी सिचुएशन इसी तरह है कि ये भी एक ट्रांस स्ट्रक्चर है, बट सी एंड डी कैन नॉट बी द आंसर। उसकी रीजन ये है कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो है वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की एक ही साइड के ऊपर प्रेजेंट हैं। डी के अंदर भी ऐसा है। सो सी एंड डी ये हमारे आंसर्स नहीं हो सकते। हम ए और बी में चेक करने जा रहे हैं, दोनों ट्रांस तो जरूर है। ओके, नाउ हाउ टू चेक इट। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया किसी CH3 CH2 डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स को इंस्पेक्ट नहीं करना चाहिए फॉर कायरलिटी। सो अनदर CH2 ग्रुप हियर, ये C डबल बॉन्ड O है, ऊपर भी COO और CH2s हैं। There is only one which needs to be inspected over here, and that is this carbon, which is a CH। तो आप देख रहे हैं एक तो इसके साथ अटैच हो रहा है हाइड्रोजन एटम, दूसरी तरफ अटैच हो रहा है इसके साथ दिस होल डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स। थर्ड अगर बॉटम के ऊपर देखेंगे तो ये नजर आ रहा है R1CO2CH2, और फोर्थ जो अटैच हो रहा है वो भी है R1CO2CH2। नाउ ये जो दो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं which are attached to this carbon atom, they are the same, R1CO2CH2 here and R1CO2CH2 here as well। सो इसका मतलब है कि ये कार्बन एटम कायरल नहीं है, दिस कंपाउंड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे टू दिस कार्बन एटम हाइड्रोजन इज अटैच्ड। ये एक होल डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो रहा है टू इट। थर्ड जो ग्रुप ऑफ एटम इसके साथ अटैच हो रहा है दैट इज R2CO2CH2, और फोर्थ जो अटैच हो रहा है दैट इज R1CO2CH2। सो दिस कार्बन एटम इज कायरल। दिस ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, और इसमें हाइड्रोजन एटम्स के हिसाब से अराउंड द वे दे आर अरेंज्ड अराउंड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, तो ट्रांस भी है। सो दिस कार्बन एटम इज कायरल, and this is the one that is the answer। ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है बिकॉज इसमें कायरल कार्बन है, एंड ट्रांस भी। जी नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए प्लीज। इसको मुझे थोड़ा सा कंप्लीट कर लेने दें। It's like this। So how many, the diagram shows the structure of vitamin A। How many chiral centers are present in one vitamin A molecule? तो बेटे देखिएगा यहाँ पर देर इज अ सी, इसको इंस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि दो सेम CH3 ग्रुप्स इसके साथ अटैच हो रहे हैं, सो इट कैन नॉट बी कायरल। ऑब्वियसली CH3 खुद भी ये वाले कार्बन एटम्स कायरल नहीं है। इस रिंग के अंदर यहाँ पर जो कार्बन एटम्स हैं दे हैव गॉट टू हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड, सो CH2 ग्रुप भी कायरल नहीं हो सकता। एक हमने पहले भी पढ़ा कि अगर कार्बन एटम डबल बॉन्ड बना रहा हो तो वो भी कायरल नहीं हो सकता। सो दिस कार्बन इज मेकिंग डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी, ये भी, ये even this, and this one is a CH2, बाकी CH3s हैं। So there is no chiral carbon atom present over here, no chiral centers over here, and the answer to it will be 0। जी next structure देखिए जरा please। It's completely like this। The compound aspartame is widely used as a sweetener in diet soft drinks। So aspartame is chiral, there are no chiral carbon atoms in C6H5। सो इसका मतलब है कि हमें ये जो C6H5 है इसको इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है फॉर कायरलिटी। How many chiral carbon atoms are present in one molecule of aspartame? See, this carbon is making a double bond, cannot be chiral। This is a CH2, cannot be chiral। अच्छा यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था कि जो CH होता है उसको कायरलिटी के लिए कंसिडर करें। देयर इज अ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू इट, दूसरी तरफ NH2। यहाँ पर ये पूरा ग्रुप ऑफ एटम्स एंड दिस होल ग्रुप ऑफ एटम्स दैट इज डिफरेंट एज वेल। सो दिस कार्बन एटम इज chiral, and let us mark it with N।
asterisk. The next one is making double bond cannot be chiral, ये भी नहीं है. This is a CH2 ऊपर CH3 है, इसको जरा देख लेते हैं ये वाला chiral है या नहीं. और this is a CH as well. So एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ NH, एक तरफ CH2, एक तरफ COO, CH3, चारों different atoms एक group of atoms attached हो रहे हैं, and therefore this carbon atom is also chiral. So there are two chiral carbon atoms present in the aspartame molecule. Which compound shows optical isomerism? So सबसे पहले देखें 2 chloropropane. मैं यहाँ पे अलग से इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ. 2 chloropropane. So propane is a pre-carbon one और ये है 2 chloropropane. अब इसमें बाकी atoms और group of atoms compete कर लें. This is going to be a CH3. This is going to be a CH3 as well. तो आप देखते हैं 2 chloropropane के अंदर दो सेम CH3 ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं टू दिस कार्बन एटम ओवर हियर. इट्स नॉट कायरल ऑब्वियसली, ये आंसर नहीं है. बी में देखें भाई लिखा हुआ है 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन. तो 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन. This will be a CH, this will be a CH2. CH2 or CH3 नहीं हो सकते. Let's inspect this one. A hydrogen atom attached, a chlorine, इस तरफ है CH2Cl और इधर है CH3. So this carbon atom is chiral. And this is the one that shows the optical isomerism. B is the answer. फिर है भाई corticosterone is a hormone involved in the metabolism of carbohydrates and proteins. How many chiral centers are there in one molecule of corticosterone? So this cannot be chiral. ये CH2 है, नहीं हो सकता. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. This is also involved in a double bond. This is a CH2, a CH2, a CH2 here, a CH2 here as well. और इसके अलावा ये भी CH2 है, ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी नहीं हो सकता. दिस कैन नॉट बी chiral एज वेल. सो ये हमने बहुत सारे आइडेंटिफाई कर लिए हैं वेरी क्विकली कि कौन से को इंस्पेक्ट नहीं करना चाहिए. The ones that need to be inspected is this one, this, 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 and this. So let's check it now. बाकी जो कार्बन एटम्स हैं जिनको कायरलिटी के लिए चेक कर लेना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन देखिए, एक तरफ CH3 ग्रुप अटैच है, एक तरफ है ये सिर्फ C, इधर है CH2 और इधर है CH. सो ये कार्बन एटम जो है वो कायरल है बिकॉज वो डिफरेंट एटम्स एक ग्रुप ऑफ एटम्स इसके साथ अटैच हो रहे हैं. एंड लेट्स मार्क इट विद एन एस्टेरिस्क. इसके अलावा ये वाला दिस इज अ CH, एक तरफ है यहाँ पे C, ऊपर है CHOH, इधर है CH बट ऑब्वियसली डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड है. सो यहाँ पर दिस कार्बन एटम इज कायरल, दिस वन इज कायरल, ये भी कायरल है, दिस वन इज कायरल एज वेल, ये भी और इवन ये भी. So you can see there are 7 chiral carbon atoms in a molecule of corticosterone. Artemisinin is a powerful anti-malarial drug. How many chiral centers are there in each molecule of artemisinin? So this one we chiral है because on one side hydrogen atom is attached, एक तरफ CH3, यहाँ पे है CH, इधर है CH2. अच्छा भाई, फिर इसके अलावा ये भी chiral है. This one is chiral as well as this. So 4 chiral carbon atoms are there in artemisinin. Option A is the answer. हमें लिखा हुआ है कि which compound exhibits the stereoisomerism. So देखिए compound is like this: CH3, CH, Cl, CH3. This carbon atom जो CH है is not chiral because दो तरफ same CH3 groups attached हो रहे हैं. The next one is CH3, CHCl, and then CH2Cl. ये carbon atom chiral है. It shows the stereoisomerism. The type is called optical isomerism. आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, एक क्लोरीन एटम on one side methyl group and on the other side there is a CH2Cl group.
So this shows chirality and it exhibits the stereoisomerism. Next question here. The following compounds are found in the seaweed Asparagopsis taxiformis. Which compound would show both cis-trans and optical isomerism? तो यहाँ पर जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इट इज एक्चुअली लाइक दिस. तो ये बताइए भाई कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड तो है लेकिन this carbon atom is attached to two same atoms, so it does not show cis trans isomerism, and therefore it should not be inspected. It's not an answer. जी नेक्स्ट पार्ट बी में देखिए बेटे. कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड, तो दिस कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड टू डिफरेंट एटम्स आर अटैच्ड. एक एटम यहाँ पर अटैच्ड हो रहा है इसके साथ और यहाँ पर होल डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स. So you know this carbon to carbon double bond qualifies to show cis trans isomerism and it's marked with an asterisk. Now, let's inspect it for chirality as well. This carbon atom is chiral because C on one side attached to a hydrogen, the second atom attached is bromine, third one is chlorine, and this one is all different as well. So, you know, all the four different atoms or group of atoms attached to this carbon atom, and therefore this carbon atom is chiral. And B is the answer. You know, why? Because इसके अंदर एक chiral carbon भी है and a carbon to carbon double bond which qualifies to show cis trans isomerism as well. So B is the answer. And last question here. Menthol is an important compound extracted from the peppermint oil. How many carbon centers are there in one molecule of menthol? So हमें check करना है भाई. This is a CH. यहाँ पर एक तरफ है CH2, इधर भी है CH2. अगर एक पोजीशन तक सेम ग्रुप्स आ रहे हो तो फिर हमें नेक्स्ट पोजीशन पर भी देखना होता है. So next step के ऊपर there is a CHOH, but here it is a CH2. So this carbon atom qualifies for different atoms or group of atoms attached to it, and it should be marked with an asterisk. It should show optical isomerism. It's chiral. The next one here, this is not chiral because attached to two same methyl groups. Let's inspect this one. CH, a CHOH on this side, a CH2 over here, and then a CH3 whole 2 over here. So four different atoms or groups of atoms attached here. This carbon atom is also chiral. Let's mark it by an asterisk. And लास्ट कार्बन आइटम जो यहाँ पर रह गया दैट इज दिस वन. सो एक तरफ सी एच है, दूसरी तरफ ओ एच, यहाँ पर सी एच, इधर है सी एच टू. So CH, so all four different atoms, all groups of atoms attached here. And this carbon atom is also chiral, so mark it with an asterisk. And the total number of chiral centers that are there in this molecule of menthol are 3. This will be it for today. We come up with some more recordings in our next lessons. Thank you.